I've written so much about how global warming is melting our glaciers that even when I see beautiful pictures of glaciers, I always think about what's happening to them and that they're going to be gone in many places soon. And it's actually hard for me to imagine the Alps without glaciers or just with tiny patches of ice, because they've been part of the landscape there for my whole life, and I've seen with my own eyes. Bueno, el trabajo de Imran Ambilal es fantástico aquí en la COP. Nos ha llenado de mucha esperanza y expectativa también, porque nos muestra unos puntos de vista a los cuales normalmente nosotros como periodistas no logramos llegar. Y también con una característica del color, la profundidad y el detalle. Cada imagen de ellos pues describe unas emociones y también una necesidad de generar acción climática por parte de todo el planeta, pues para poder lograr una conciencia ciudadana. Eso también hace parte de esa conciencia, estas fotografías. So I also agree with her comment, and I would like to add that it's also difficult to see what's really happening in different regions in our eyes. So it's really good opportunity to see the photographies from the activists and the real cases. そうですね。気候変動の問題は結構科学的なことだったりとか、数字の問題がすごく難しかったりするので、普通の人たちは気候変動の危機を感じるのが難しい場合があるので、こうやって映像だったりとか写真で目で見てインパクトを受けて、अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम माहौलियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक़ा दुबई में मुनक्कद ख़ुसूसी इजलास COP 28 के मौका पर दो पाकिस्तानियों की तस्वीरी नुमाइश सेफ नेचर बिफोर इट्स टू लेट के उन्वान से रिपोर्ट कर रहे हैं यूके से हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद मीर। पाकिस्तान के आलमी शोहरत के हामिल नेशनल व इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता ग्राफिक डिज़ाइनर, मुसव्विर, फोटोग्राफर, टाउन प्लानर्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर और रिसर्च स्कॉलर, आर्ट डायरेक्टर बिलाल जावेद और दुनिया के मशहूर फोटोग्राफर, ग्राफिक डिज़ाइनर, ट्रैवल व्लॉगर और माहौलियाती रिपोर्टर इमरान चौधरी के दुनिया भर में लोगों को माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीलियों और गैसों के अखराज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से माहौलियाती तब्दीलियों से सैलाबों के बढ़ते हुए नुकसानात, जंगलात के बेदरे कटाई, आलूदा पानी और पानी की कमी से दरपेश खतरात से आगाह करना, तेज़ी से होने वाली इंसानी ज़िंदगियों और कुर्रे अर्ज़ पर मदूम होती हुई हयात को दरपेश खतरात से आगाह करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दुबई में माहौलियात से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास के मौका पर सेफ नेचर बिफोर इट्स टू लेट यानी कुदरती माहौल को महफूज बनाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। आर्ट डायरेक्टर बिलाल जावेद और इमरान चौधरी की तस्वीर में माहौलियाती तब्दीलियों के ज़ेर असर कुर्रा अर्ज़ पर इंसानी ज़िंदगियों को माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश खतरात से नाजरीन को आगाह करने और इन खतरात के तदारुक के लिए आलमी सतह पर किए जाने वाली कोशिशों में अपना हिस्सा डालने के लिए अपनी बनाई हुई तस्वीरों के जरिए दुनिया भर की हुकूमतों के नुमाइंदा अफराद को इस मसले से नबर्द आज़मा होने के लिए बड़ी महारत और खूबसूरती से फ़िक्र अमल की दावत दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम इस माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शरीक दुनिया भर के सफारती नुमाइंदों, सफारतकारों और नुमायाँ आलमी मुक़तदीर शख्सियात और शुरका ने कुदरती मनाजिर और माहौलियाती तब्दीलियों पर मुश्तमिल तस्वीरों को खुसूसी दिलचस्पी से देखा और आर्ट डायरेक्टर बिलाल जावेद और इमरान चौधरी की ज़ाती काविशों और मेहनत से बनाई हुई तस्वीरों और उनकी फ़ोटोग्राफी के काम से दिलचस्प और फ़नी महारत के अलावा बेलौस कोशिशों से पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम और मकासद के हसूल के लिए उनकी फ़नी खिदमात को भरपूर सराहा गया। And we welcome the opportunity to see some amazing pictures which describe how climate change is affecting people. So we can start here, for instance. These people are having to emigrate from their homes because they've been forced out because of lack of water, mainly, which is depicted here as well. That used to be a lake full of water. Now it's just piped in water. This boat used to sit on water. Must have been some time ago because the water has eroded away. And here it's interesting because this used to be a very wide river
which these boats could navigate across, and now there's no business. People are emigrating. Unfortunately, there's deforestation that happens all over the world. Some children who are having to move from home to home because of the melting glaciers behind them. I'm sure these people look happy, but they're not. Deforestation again forced on by climate change. The melting of glaciers. Again, the glaciers giving rise to streams, but only wildflowers grow there. This is an interesting one. Man-made plastic littering everywhere in the world. So this is just to describe that we shouldn't really be doing that. These two pictures are people who create their homes out of what is left of the landscape. That's obviously quite a unique home. You can see how the lake has receded here, reducing the amount of water for the birds. And again here. People forced to construct their homes out of materials used for them to be able to create somewhere where they can live in a hostile country. The water here, I'm told, is both it's rainwater, but it's drunk both by the humans who live there and by the animals. But that is only rainwater. So when that dries up, there is no water. And that's very typically explained here. It is very apt that Imran and Bilal मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिका UNO के इस खुसूसी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर बराए माहौलियात ने भी शिरकत की। उन्वान से मुनक्कदा इस तस्वीरी नुमाइश में पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ सेव नेचर बिफोर इट्स टू लेट में मौजूद फितरत के हुस्न की आकाशी खूबसूरत कुदरती मनाजिर पर मुश्तमिल तस्वीरों के अलावा पाकिस्तान की हसीन पहाड़ी वादियों में तेजी से पिघलने वाले ग्लेशियर्स के मनाजिर से लेकर पानी की कमी से खुश्क होती कुदरती झीलों और चुलिस्तान के सहरा से वादी सिंध बलूचिस्तान के वसी जरखेज मैदानों के अलावा सियाहती मुकामात से गवादर के साहलों और फिर दरियाए खंजराब से लेकर कराची की बंदरगाहों के मदूम जुज़ की मनासिर तक और दुनिया भर में प्लास्टिक आलूदगी और माहौलियाती आलूदगी पर मुश्तमिल मुनफरिद और खूबसूरत तस्वीरें दिखाने वालों की तवज्जो को अपनी तरफ मजबूल कर रही है। याद रहे कि आर्ट डायरेक्टर बिलाल जावेद और इमरान चौधरी इससे पहले भी अपनी ज़ाती काविशों और वसाइल से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के पुरअमन रोशन सॉफ्ट इमेज और खूबसूरत तारीखी सकाफती वर्से को उजागर करने के साथ साथ दुनिया को पाकिस्तान की तहजीब और सकाफती इक़दार से मुतारफ़ करवाने के लिए और पाकिस्तान में सियाहती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए और आलमी सतह पर सियाहत के शौकीन अफराद को मुतवज्जा करवाने के लिए दुनिया के कई ममालिक में सी पाकिस्तान लव पाकिस्तान के उन्वान से अपनी बनाई हुई पाकिस्तान से मुतल्लिका खूबसूरत और अछूती तस्वीरों की नुमाइश मुनक्कद कर चुके हैं। मज़ीद 12 माजी में भी UNO के ज़ेरे एहतमाम होने वाली आलमी माहौलियाती इजलास और कॉन्फ्रेंस के मौका पर फ्रांस, मराकश, पोलैंड, स्पेन, UK और मिस्र में भी सेव नेचर बिफोर इट्स टू लेट के उन्वान से दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दरपेश खतरात से आगाह करने और उनकी फौरी तदारक के लिए उनकी बनाई हुई मुनफरद तस्वीरों की नुमाइश का इनकाद हो चुका है। कैमरामैन काशिफ इंसारी के साथ शाहिद मीर, INA न्यूज़ UK।